Ekadashi ki jai. The description of NIRJALA Ekadashi, which occurs during the month of June, is found in the Brahma Vaivarta Puran in the conversation between Vyasadeva and Bhishmadev. ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा है व्यासदेव भीष्मदेव कथोपकथन ने निर्जला एकादशी विषय वंस भीमसेन थरे भीमसेन द यंगर ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर इंक्वायर्ड फ्रॉम द ग्रेट सेज शिला व्यासदेव ओ मोस्ट लर्नेड एंड वर्शिपेबल ग्रैंडफादर प्लीज हियर माय रिक्वेस्ट माय एल्डर ब्रदर युधिष्ठिर मदर कुंती देवी ब्रदर्स अर्जुन नकुल एंड सहदेव एंड द्रौपदी डू नॉट ईट एनीथिंग ऑन द डे ऑफ एकादशी They especially Yudhishthir always tell me that I should also fast on Ekadashi. ତେଣୁ ଥରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଭୀମସେନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇମାନେ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଟେଲ୍ ଦେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦୋ ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏକାଦଶୀ is an injunction of the scripture, I cannot bear my hunger and therefore I am unable to fast. ସେମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଏକାଦଶୀ କର ବୋଲି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଭୀମଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବୃକୋଦର ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଇଟିଂ ଭୋଗାରସ ଇଟର ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଇନ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ଆଜ୍ ପର୍ ମାଇ କ୍ୟାପାସିଟି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଲର୍ଡ଼ କେଶବ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ଚ୍ୟାରିଟି କରିପାରିବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇପାରିବି କେଶବଙ୍କର ନାମ ନେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଭୋକରେ ରହିପାରିବିନି I cannot fast. So please instruct me how can I obtain the results of Ekadashi without having to fast. मतलब रास्ता बता दो शॉर्टकट रास्ता जो द्वारा कि एकादशी बिना एकादशी करी केमती फल प्राप्त है भी. On hearing these words of Bhimasen, Sri Vyasadeva said, "O Bhima, if you want to go to the heavenly planets and avoid the hellish planets, then you must refrain from eating on both the Ekadashis of each month." यदि तुम्हें स्वर्ग लोक जो चाहछ नरक उद्धार हो चाहछ ताले दीटा एकादशी व्रत पालन करिया पड़िबो ना सब. Bhima said, "O great sage, it is impossible for me to observe fast on 24 Ekadashis every year as instructed by the Lord. So what to speak of fasting day and night? I cannot even tolerate my hunger for even a moment." दिन राति कथा कौन कौन गोटे मोमेंट मध्य मोर भोक संभाली पारि नहीं 24टा पुणी एकादशी कथा कहते जो कृष्ण कहते वेरी डिफिकल्ट थ्रू द फायर ऑफ हंगर नोन एज ब्रिक is always present within my stomach and it is extinguished only by voracious eating. बहुत गुड़े खाई सारा पर मुझे भोक मरे by but with great endeavor I can fast only one day in a year. तेणु बहुत कष्ट सत्वे गोटे दिन वर्ष उपवास रही पारे. Therefore please instruct me about a vow that I can follow to attain auspiciousness both in this life and the next. तेणु एमती गोटे रास्ता बतातु गोटे दिन केवल उपवास केमती रही पारे. So Vyasadeva said, "O king, you have already heard from me about the Vedic religious principles and the duties of the human beings. But in the age of Kali, not everyone is capable of following these rules and regulations. Therefore, I will tell you about the sublime method by which you can achieve great results." तेणु कलिजुग रे ये जो एकादशी व्रत पालन करिया बहुत कष्ट तेणु एटलिस्ट मुझे तुम गोटे सबलाइम गोटे सर्टकट रास्ता बतेबी जो द्वारा कि तुम यहाँ करें ग्रेट रिजल्ट तुम प्राप्त हो. This method is the essence of all the Puranas. Anyone who observes the Ekadashi of waning and waxing moons by fasting never goes to hell. जाने जो एकादशी व्रत पालन करे माने दीटा एकादशी मास रे से केतले नरक को जाए नहीं. Hearing Vyasadeva's words, that strongest warrior Bhimasen became frightened and shivered like a leaf of a banyan tree and said, "O grandfather, what should I do? I am totally unable to fast twice a month throughout the year. Therefore, O my Lord, kindly instruct me about one vow that offers the most merit and how by observing it I can achieve all benefits."
पुनः शुणी सारा भीमसेन बहुत डरीगले कहले तो मुझे एकादशी व्रत पालन करनी केमती ताले उद्धार पाइबे देन श्री व्यासदेव रिप्लाइड oh the ekadashi which occurs during waxing moon of the month of May or June during the sun's presence in either Tausuru or Gemini Rashi is called NIRJALA EKADASI. Ajo NIRJALA EKADASI. One should observe total fast even from drinking water in this EKADASI. NIRJALA means without any water. Pani pivani aji gote din raha uchit. On this day, one should perform achamana for purification by drinking that amount of water in which a single mustard seed or a drop of gold can be immersed. Gote drop. Achamana, kevla achamana. Okay, sabana achamana khali karti hoti. One should place the said amount of water in his palm, right-handed pani jala negri held in such a way as to resemble a cow's ear. If one drinks more or less water than this, it will amount to drinking of wine. यदि ये पानी रू अधिक कि कम पीले ताले it will become मद्यपान कला वाला. One should be very careful through NIRJALA EKADASI. Okay. One must not eat anything at all on this EKADASI. Otherwise, his bow will be broken. तेणु जदि किसी शुणी खाईदेला ताले एकादशी व्रत ताले निष्फल. One should not drink even water from the moment of sunrise from the day of Ekadashi until the sunrise on the day of Dwadashi. Sunrise, आज sunrise to काली sunrise पर्यंत किसी खाया उच्च पानी ले पीबो नहीं पानी पीले से मद पीला पे लगेला. Then in this way, if one strictly observes this Ekadashi without drinking water, then he can attain the results of observing all the Ekadashis of the year. Vasudev is telling this. Vasudev कहते authority, है ना? ते कहते कि जने जदि एही परि भावरे एकादशी व्रत पालन करियो निर्जला एकादशी तने वर्षटा 24टा एकादशी रो फल पाइ जो. In the early morning on the day of Dwadashi दिन कौन करिया उचित. Now one should take bath and give gold and water in charity to the brahmanas. काले हम किए कितने गोल्ड देवे? प्रभु जी अच्छे दे. गोल्ड का धोरी आती है. Gold and water in charity. Water this is पानी धोरी आती दे तारी. Gold and water in charity to the brahmanas. Thereafter the followers should gladly eat with the brahmanas. You know? नेक्स्ट दिन से बोलो प्रसाद पान कर भोजन काली संडे सकाल समय भी दिया जाए ना द्वादशी पारण दिया. तुम द्वादशी आम आशा कर समस्त आसपा प्रसाद पाइबा तेणु से आमर भी लाभ. हाँ पारण काली पारण समय टे जल्दी तेणु कथा टे कम समय हम पारण जावा 5टा 20 7टा 20 पारण समय तेणु काली आसला जस्ट आरती करियो तो प्रसाद पाइज प्रसाद पाई सारा कथा स्टार्ट हो. ओके काली टाइम चेंज. ओ भीष्मसेन ओ भीमसेन नाउ प्लीज हियर अबाउट द पाइटी वन accumulates by observing this ekadashi. तेणु कौन कौन फल मिले शुणु. By following this ekadashi one can achieve the result of following all the ekadashis throughout the year. यदि जने एकादशी जन निर्जला एकादशी करछुनी ताल 24टा एकादशी फल पाइबे. Once Lord Vishnu, who holds a conch, a disc, a club and a lotus flower in his hand, told me, if a person gives up all varieties of religion and surrenders unto me and follows this NIRJALA EKADASI, which is very dear to me, he is certainly relieved of all sinful reactions. व्यासदेव कहते थे कृष्ण मत एमती कहते कृष्ण कहते व्यासदेव को जदि जन यहीपरि भाव में निर्जला एकादशी रखे तार जीवन सबु प्रकार सब जो सिन्स पाप कर्म अच्छी सब नलिफाई हो. वन कैनट अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन बाय गिविंग वेल्थ इन चैरिटी और अटेन एनी बेनिफिट बाय फॉलोइंग स्मार्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कलियुग.
In fact, the Vedic religious principles have been have been extinct in the age of Kali, which is polluted with the various faults. कली युग रे बहुत भूल कली कली तो बोले कला सब अच्छी तेणु सब फॉल्ट्स अच्छी बहुत दोष अच्छी कली युग रे तेणु कली युग अन्य किसी करिया बड़ कष्ट तेणु एकादशी व्रत पालन करिया उचित ये निर्जल एकादशी स्पेशली ओ सन ऑफ वायु what more can I tell you eating is actually prohibited on all the ekadashis भोजन करिया सब एकादशी रे एक्चुअली मना करा जाय छी and even the drinking of water is prohibited on निर्जला एकादशी निर्जला एकादशी रे जल मध्ये भी पान करिवा उचित नै by observing this ekadashi one achieves the piety of visiting all the holy places सब holy places जो तीर्थ गले जहाँ पुण्य मिले से सब पुण्य केवल एकादशी व्रत पालन कले आपन भावते आज दिन में तो बहुत काम अच्छी केमती कौन सब रूल रेगुलेशन बताते कौन किन करिया okay at the time of death such a person is not approached by the fierce looking jamadutas rather he is approached by the divine looking vishnu dutas to be transferred to the abode of vishnu तेणु निर्जला एकादशी जो व्रत पालन करे मृत्यु समय से जमदूत को देखे नहीं विष्णु दूत को दर्शन करे if one gives water and cows in charity after observing this ekadashi then he is freed from all sinful activities तेणु प्रभु जी हम सागर अच्छा आम काली प्रभु फास्ट जल देवा आम सब सिनफुल एक्टिविटी रखा जाओ भाग्य when the other Pandavas heard about the glories of this ekadashi they resolved to observe it जो से श्रवण कले एकादशी महात्म्य तेणु से प्रतिज्ञा कले हाँ आम भी एकादशी व्रत पालन करिबा तेणु फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड भीमसेन began observing this Nirjala Ekadashi which became famous as Pandava Nirjala or Bhimaseni Ekadashi. Bhimaseni Ekadashi. Okay. By following this Ekadashi, sinful activities as huge as Sumeru or Mandara mountain are at once burned to ashes. एते पापो सुमेरु परी पापो अच्छी सब burn to ashes in you. O King, Lord Krishna has declared that any pious activities such as taking bath in holy places, giving charity, chanting Vedic mantras, and performing sacrifices that are carried out on this Nirjala Ekadashi day become inexhaustible. जहाँ भी आम पुण्य कर्म करथिया जहाँ भी जप करथिया जहाँ भी पाठ पढ़िथिया इत्यादि एकादशी दिन जहाँ भी करथिया एता परमानेंट एसेट ही रहला one who reads or hears the glories of this ekadashi with devotion goes back to the abode of Vaikuntha तेणु एकादशी एक महात्म्य पढ़े कि सुने भगवत धाम को स्थानांतरित हो जाए the result of one attains by observing the woe of Amavasya. The result one attains by observing the woe of Amavasya conjoined with Pratipada and Amavasya next one is Pratipada first. The result and offering oblations to the forefathers during the solar eclipse is attended simply by hearing the glories of this Ekadashi. केवल एकादशी महात्म्य जी पाठ करे ताको एते पुण्य मिले केमती ना जेतले अमावास्यार नेक्स्ट दिन प्रतिपदा यही समय से फोर फादर को किसी अर्पण करे तार जी पुण्य केवल एकादशी व्रत खाली श्रवण ये पुण्य तेणु जे व्रत पालन करते पुण्य तेणु यहपरी भाव में निर्जला एकादशी विषय पाठ कले जय निर्जला एकादशी की जय शिला प्रभुपाद की जय आनंद कोटि वैष्णव भक्त ब्रह्म की जय हरे कृष्णा